Good evening, everyone. So today we are back again with the second part of the visuals and the image-based questions and image-based discussion. Okay. So last I stopped at the projection errors in which we discussed elongated, shortened, horizontal errors. Those were the projection errors. Now we are going to discuss about the exposure errors, like what are the problems that can occur due to exposure, whether it is low kvp, high kvp, low ma, high ma, exposure time parameters. Okay, so in exposure errors we are going to discuss blank image, low density image, high density image, and image with high and low contrast. So the first is a blank image. In this, you don't need any rocket science. Blank image is something when the duty cycle or the tube rating as we have it, like how many exposures can be done in a particular second or a particular minute. Once it overshoots that, then you might hear a noise, like how we take an x-ray, you hear a noise, but there won't be any x-rays coming out of it because it is an auto cutoff. Okay, so blank image occurs most commonly due to this. Okay, a film that didn't receive radiation will have no image and will appear clear. That is a blank image. It is very rarely that you will find a question like this being asked in an exam. Okay, low density, we all can recognize low density, in which you can't see the structures surrounding the tooth or the tooth structures properly. But how will you differentiate between a fogged image and a low density image? In a low density image, at least you can see the outline of the pulp chamber or the root canals properly. In a fogged image, you cannot appreciate the pulp chamber properly, you cannot appreciate the root canal anatomy properly. It will be totally hazy and faint, okay, with a bit of blurring. That is a fogged image. Okay, so now you can differentiate between a fogged and a low density image. Next is your high density image. High density, again, the whole area will look black, more towards the blackish side. Low density, it will look more towards the light side. Okay, this will be more towards the dark side. Next, the processing errors. Chemical errors: light image, dark image, blank image, reticulation, black spot or patch, black line, white spot or patch, yellowish brown discoloration. They all come under chemical errors. Okay, so chemical error से मेरा मतलब क्या है? जो आपका डेवलपर, फिक्सर, ये सारी चीजों के साथ जब हमारे कोई एरर्स आते हैं तो हम उनको केमिकल एरर्स बोलते हैं. So whatever I said right now are the chemical errors. Then comes the film handling errors, जो हमारी तरफ से होते हैं. Writing lines, sometimes what we do, we write on the x-ray, है ना, नाम लिखना हो, टूथ नंबर लिखना हो, हम लिख देते हैं, बट जो इंडेंटेशन है उसके कारण वो राइटिंग लाइंस आपके एक्सरे पर आ जाती हैं. डेवलपर कट ऑफ, हमने डेवलपर को अच्छे से डिप ही नहीं किया. फिक्सर कट ऑफ, डेवलपर के बाद फिक्सर में डिप नहीं किया. ओवरलैप्ड फिल्म, जब आपके हैंगर्स होते हैं उस पर बहुत सारी फिल्म एक साथ होती हैं तो उसमें क्या होता है, आप जब डिप करते हो तो वो ओवरलैपिंग कई बार हो जाती है. नेक्स्ट, फिंगर नेल आर्टिफैक्ट. समटाइम्स वी डोंट यूज अ हैंगर और अ क्लिप, वी यूज अवर दिस, एंड दिस हैपेंस मोस्ट कॉमनली विद द लेडीज और द गर्ल्स वेयर दे हैव दोज आर्टिफिशियल नेल्स. तो वो जब उनसे पकड़ते हैं तो वो एक सेमी-ल्यूनर टाइप एरिया आ जाता है. दैट इज नोन एज अ फिंगर नेल आर्टिफैक्ट. Smudge, again when you hold it with your
फिंगर्स, आपके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आ जाते हैं, दैट इज नोन एज अ स्मज। देन इट इज अ स्क्रैच्ड फिल्म, व्हेन यू डिप इट, है ना, तो आपके स्क्रैच लग जाते हैं स्टेनलेस स्टील से, और वही डिपिंग से कई बार फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है जिससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, विच कैन रिजल्ट इन विजुअल डिस्टर्बेंसेस ऑन अ एक्सरे। क्लियर? फर्स्ट है रेटिकुलेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिकुलेशन को मैं बोलूंगा इट इज लाइक अ न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस ऑफ योर एक्सरे फिल्म। ओके, इसके अंदर डॉट 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 आ गए। ये कब होता है? जब टेम्परेचर चेंज हो। मान लो आपका डेवलपर बहुत ज्यादा गर्म है, पानी उतना ही ठंडा है, तो ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर होता है उसके कारण आपका रेटिकुलेशन होता है। ओके, व्हेन द फिल्म इज सब्जेक्टेड टू अ सडन टेम्परेचर चेंज बिटवीन द डेवलपर एंड वाटर, इट अपीयर्स एज अ क्रैक्ड फिल्म। नेक्स्ट इज ब्लैक स्पॉट और ब्लैक पैच। इट मीन्स डेवलपर कंटेमिनेशन इवन बिफोर इमर्शन इनटू द डेवलपर सॉल्यूशन। कई बार क्या होता है, जहां पर हम फिल्म खोलते हैं वहां पर जो एरिया होता है वहां पर पहले से डेवलपर के कुछ आपके ड्रॉप्स होते हैं, तो हम जहां खोलते हैं वहां पर पहले डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है डेवलपर में जाने से पहले, तो कुछ एरियाज आपके ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, है ना, ज्यादा ब्लैक दिखेंगे, दैट इज ब्लैक स्पॉट और पैच। इट लुक्स something like this, you can see. Okay, next comes the black line. Okay, so black line is nothing but अगर आपका कुछ इस तरीके से एक ये है और मैं इसको बार बार ऐसे करते हैं अपन एक फिल्म को, तो क्या होता है, जो वो बीच की लाइन होती है वहां पर एमैल्गमेशन हो जाता है आपके सिल्वर हैलाइड क्रिस्टल्स का, तो वहां पर वो एक्सरे ज्यादा खींच लेता है एंड इट कैन कॉज दिस ब्लैक लाइन। ओके, ये मैंने आपको पहले उसमें पढ़ाया। अब अगर केमिकल एरर्स की वजह से ब्लैक लाइन हो रही है तो आपको एग्जाम में दे आर गोइंग टू मेंशन ब्लैक लाइन ड्यू टू केमिकल एरर, ब्लैक लाइन ड्यू टू केमिकल एरर, और उसमें आपके पास एक ही ऑप्शन का आपको ध्यान रखना है, डर्टी रोलर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। व्हेन दे टॉक अबाउट ब्लैक लाइन ड्यू टू फिजिकल एरर, तो वो हमारे हाथ में रहता है, उसके कारण ब्लैक लाइन आती है। लेकिन इफ दे आपको बिल्कुल उससे पूछा है कि ब्लैक लाइन ड्यू टू केमिकल एरर, सो योर आंसर विल बी डर्टी रोलर इन ऑटोमेटिक प्रोसेसर। नेक्स्ट इज व्हाइट स्पॉट और पैच, कंटैमिनेशन विथ फिक्सर बिफोर प्रोसेसिंग। जैसे ब्लैक स्पॉट अपना आ रहा था कंटैमिनेशन विथ डेवलपर, वैसा ही कंटैमिनेशन विथ फिक्सर, जहां पर हम खोलते हैं वहां पर फिक्सिंग पहले ही चालू हो जाती है डेवलपर में जाने से पहले, तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, व्हाइट स्पॉट्स एंड पैचेस कैन बी सीन। yellowish brown discoloration. Okay, now this yellowish brown discoloration is also known as your dichoric fog. Dichoric fog, it can be a pinkish hue or it can be yellowish brown discoloration, it can be both ways. ठीक है, जितना ज्यादा कंटैमिनेट होता जाएगा, ओके, जितना ज्यादा आपका सॉल्यूशन फिक्सर या डेवलपर कंटैमिनेट होते जाएंगे, जितना लंबी समय तक हम उसको रीयूज करते रहेंगे, तब आपका ये येलोइश ब्राउन डिस्कलरेशन आ जाता है। ओके, राइटिंग लाइंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, व्हेन यू अपीयर टू राइट। फिंगर नेल आर्टिफैक्ट भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज डेवलपर कट ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट यू नीड टू सी इज डेवलपर कट ऑफ में ये एक सीधी लाइन है, ओके, ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन अपने को याद रखनी है। जहां पर भी सीधी लाइन मिलेगी वो हमारा या तो डेवलपर या फिक्सर कट ऑफ होगा, ठीक है। तो जब आपको ये इस तरीके की लाइन दिखती है और ऊपर वाइड दिखता है, दैट मीन्स
The answer is developer cutoff. Clear? फिक्सर कट ऑफ में आपको इस तरीके से स्ट्रेट और ब्लैक लाइन दिखेगी, दैट इज फिक्सर कट ऑफ. ओवरलैप्ड फिल्म और फिक्सर कट ऑफ में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ओवरलैप्ड फिल्म में यू विल सी सम अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन. सॉरी, तो फिक्सर कट ऑफ में जो ब्लैक लाइन रहेगी वो कंप्लीटली ब्लैक रहेगी, उसमें आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा. ओवरलैप फिल्म में जो भी ब्लैक लाइन के पीछे रहेगा उसमें आपको हल्का सा स्ट्रक्चर दिखेगा. क्लियर? उसमें आपको हल्का सा स्ट्रक्चर दिखेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरलैप्ड फिल्म एंड फिक्सर कट ऑफ. क्लियर? नेक्स्ट इज योर smudge. As I said, this area that you can see is a fingerprint, that is a smudge. Scratched film, sometimes what we do, हम डेवलपर में डालने के बाद व्यू बॉक्स पे देखते हैं. व्यू बॉक्स के जब डेवलपर में रहता है तो उसमें एक्टिवेटर रहता है जो आपके व्हीकल को स्मूदन कर देता है. तो जब हम व्यू बॉक्स पे डेवलपर के बाद लगा देते हैं कई बार, तो उसके कारण स्क्रैचेस आ जाते हैं. ओके? Static electricity, as I said, it occurs most commonly during the periods of low humidity or dry period, especially in the winter season. Okay? जब हम डिप करते हैं तो स्टेनलेस स्टील टैंक और जो फिल्म है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, उसके कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है. इट इज वेरी इजी टू रिकॉग्नाइज एज अ विजुअल. दिस इज हाउ इट लुक्स. ठीक है? एक पुराना सीरियल आता था आहट करके, उसमें ऐसे ही पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी, तो उस चुड़ैल को और इस पेड़ को याद रखें. उसी तरीके के भूतहा पेड़ हैं ये. ओके? so this is how static electricity looks like. So let's revise. This is a blurred image. This is a metallic partial denture. This is a blurred image. This is a reverse film. This is apices cutoff or apex cutoff. This is a dropped film corner. This is a distortion because there is bend in the end. This is an elongated visual. This is a horizontal overlap. This is a double image in which a single film was exposed twice. This is a static electricity. This is a light radiograph or low density. This is a white spot or patch. This is yellowish brown discoloration. Again, this is reverse image. Now look at A and look at B. This is developer cutoff and this is cone cut. Can you see the curved line? That is a cone cut. Can you see the straight line? That is a developer cutoff. Remember, okay? Next we are going to talk about and show you, I am going to show you some visuals on the extraoral radiograph. So the first radiograph that we are going to start with, the first extraoral radiograph that I am going to start with is the OPG. Okay, is the OPG. So right here is how the X-ray unit of the OPG looks like. Okay, so this area here
is the OPG unit. This area here is the lateral ceph or the extraoral unit. Okay. This is the film that we use for OPG, that is a screen film. These are the intensifying screens. So this is basically a visual of a cassette, and the white areas that you can see here are the intensifying screens that absorbs the X-ray and emits visible light. This is the cassette. Next, let's talk about the bony landmarks in the mandible. So the first landmark that you are going to see is number 1, that is the head of the condyle. Now bony landmarks in mandible and maxilla are very important when it comes to OPG or extraoral radiograph. Okay, so number 1 is your head of the condyle or condylar head. Next is the sigmoid notch. Next, here you can see the number 3 is your coronoid process. But I'll tell you one thing, most of the areas where this posterior area, the third molar, close to third molar area, like the coronoid process, like the pterygoid plate, the hamular notch, they don't ask in the OPG. Why? Because there is lot of superimposition of the structure. Okay, the next area that they don't ask in OPG is the anterior area. The anterior area also they will not ask, because again there is lot of superimposition. Okay, so number 4, this area is your external oblique ridge. Number 5 is very important, mandibular or inferior alveolar canal. Number 6 is the ascending border or the posterior border of ramus. Number 7 is your gonial angle, again very important. Number 8 is the inferior border or the lower border of the mandible. 9 is your mental ridge, as I said, not very frequently asked. Number 10 is your genial tubercle, more commonly and more better appreciated in the IOPA. Number 11 is a mental foramen, again very important. In Indian population, mental foramen is seen most commonly under the lower second premolar. Number 12 is the external oblique ridge. Number 13, okay, number 13 is your lingula. Number 14, now it is not very clear, number 14, because it is not a digital X-ray, but you will get a clearer X-ray in the exam. So number 14 is like a ghost image, so it will be seen somewhere here also. This is the hyoid bone. This is the hyoid bone. Next, bony landmarks in maxilla. So first is this number 15. This is the glenoid fossa, where the head of the condyle articulates. Number 16 is what keeps the condyle from coming way too forward or acts as a resistance for the disc. That is your articular eminence. This bridge that you can see, which is shown in 17, which connects the articular eminence with the posterior border of the maxillary sinus, is your zygomatic arch. Number 18 is your posterior border or the posterior wall of maxillary sinus. Number 19 is the floor of the maxillary sinus. Number 20 is the sinus septum, or also known as the zygomatic process of maxilla forming the innominate line.
Number 21, on this side and on this side is your shadow of the hard palate. Number 22 is the floor of the orbit. Number 23 is your nasal septum. Number 24 is your incisive foramen. Again, as I said, एंटीरियर के ज्यादा नहीं पूछेंगे, मोस्टली नहीं ही पूछेंगे, पोस्टीरियर रीजन पे हमको ज्यादा ध्यान रखना है. नंबर 25th इज योर inferior conchae. Number 26 is your meatus. This area, I'll show you first. This area, okay, where the orbital floor and the innominate line meet is the frontal process of the zygomatic bone, not the arch, bone. Arch तो आपका ये है, this is your arch, okay, this is your arch, this is zygomatic bone, frontal process. This is your pterygomaxillary fissure. Again, I'll show this V-shaped area. This is the posterior wall of the maxillary sinus, and this suture-like thing, there is a small gap. This is a pterygomaxillary suture, okay, or a pterygomaxillary fissure. Clear? Then comes 29, that is a spine of the sphenoid bone. 30th is not important. 31 is not important. What are the other structures? So you can see here that they have marked this area. This is the external auditory meatus. Then comes, this is a styloid process. Now surrounding the styloid process is the shadow of the ear lobe. Okay. Next, rest are not important. So these are some of the visuals that we will see. Why OPG is required. What is the case here? There is a impacted third molars, and you can see the correlation with the mandibular canal. To evaluate the mixed, this OPG shows what? This OPG shows mixed dentition period. Okay. What does this OPG show? On the left side, it shows a pathology which starts from the posterior border and involves the ascending border of the ramus. Here you can see the fracture of the left side parasymphysis and the right side gonial angle. This is an edentulous or partially edentulous area. This is a post-operative after trauma, post-operative after implants. Next, what happens when the positioning of lips and tongue is not proper? If the tongue आपके mandibular anterior के पीछे रहेगी तो shadow will be seen on the anterior area. What will happen when the Frankfurt plane is not straight or parallel to the floor and it is going upward? First of all, what is Frankfurt plane? Porion to orbital, we draw a line. This should be parallel to the floor. If it is going upward, this is the visual. The ramus part, the posterior border of the ramus and the chin area is cut. Okay, when the positioning of Frankfurt plane is upward. When the positioning of Frankfurt plane is downward, you have kept it down, the chin is too down, it is going downward, then what happens? It will result in a devil's smile line. Devil's smile line. You can see
there is an exaggerated smile, ठीक है, it looks something like a devil, so that is a devil's smile line. Clear? And in this also the lower part of the chin or the symphysis is cut. What happens when the positioning of teeth is anterior to focal trough? That means the patient is biting somewhere here. Okay? The patient is biting somewhere here. The teeth will appear narrow and thin. The teeth will appear narrow and thin. Clear? Narrow and thin. If the teeth is posterior to the focal trough, the teeth will appear fat and wide. The teeth will appear fat and wide. तो बेसिकली पेशेंट क्या करता है, यहां पर बाइट करना होता है, कभी यहां करते हैं, कभी यहां करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, पोजिशनिंग ऑफ द मिड सजाइटल प्लेन. सो दिस इज योर मिड सजाइटल प्लेन. ओके. सो व्हाट डज पेशेंट डू समटाइम? कभी ऐसे या ऐसे या ऐसे. ओके. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, one area of the ramus will be bigger than the other area of the ramus. So this area, see the breadth, and this area, see the breadth. Okay, one area is more in dimension than the other one. Patient movement, this is very easy. अगर ऐसा कुछ आ गया तो बल्ले बल्ले. Okay, everyone will score points. Positioning of spine is very important. So when you put it on the chin rest, your head should be upright and it should not be like this, because आपका नीचे से ऊपर है -8 डिग्री का वर्टिकल एंगुलेशन होता है आपके ओपीजी का, तो आपके स्पाइन के थ्रू आती है. तो अगर आप और ज्यादा हेड बेंड करोगे तो देयर विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ स्पाइन ऑन द एंटीरियर रीजन. ओके. Again the dark, light and the fogged radiograph. So अब आप fogged radiograph देखिए. This here is a fogged radiograph. Okay, this is a fogged radiograph. So मैंने आपको डिफरेंस बताया था. अगर आप fogged radiograph देखोगे तो आपको इसके अंदर कहीं पर भी पल्प चेम्बर्स की एनाटमी समझ नहीं आएगी. वहीं अगर आप लाइट रेडियोग्राफ देखोगे तो आपको यहां पर पल्प चेम्बर्स की एनाटमी समझ आएगी. गॉट इट? क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, द अदर एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट इज योर टारगेट. Okay, so this is how a lateral ceph looks like. You can see the soft tissue profile, you can see the vertex is cut. So always remember these 2 points when they are comparing it with lateral skull radiograph. Lateral skull में आपको दोनों ही नहीं मिलेंगे, ना soft tissue profile मिलेगी, ना ही आपको vertex मिलेगा. Clear? True lateral skull, this is a true lateral skull. As I said, no soft tissue profile and the vertex can be properly seen. Clear? This is a Waters projection. So this is a PNS view. Okay, this is a PNS view or your Waters view or your occipitomental 37 degree. Occipitomental 37 degree. Okay, so occipitomental के भी 2-3 होते हैं, 30, 37 and 10 degrees. उसमें से PNS व्यू जो है वो 37 डिग्रीज है. तो आपके PNS व्यू में आपको या ऑसिपिटोमेंटल व्यू में आपको दिखती है मैकग्रेगर एंड कैंपेबल लाइन. अगेन एन इंपॉर्टेंट विजुअल. द फर्स्ट लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, दैट इज दिस रेड लाइन दैट यू सी. दिस इज अ zygomaticottemporal
और द zygomaticofrontal sutures, ये जो एस्ट्रिक्स बने हुए हैं, it starts from the zygomaticofrontal and across the upper edges of the orbit. Orange line is the middle line, ये चालू होती है आपकी zygomatic arch से, zygomatic bone ends on the other side. The third is your condyle, coronoid and ends on the other side. Okay, ठीक है. एक और चौथी लाइन होती है, दैट इज योर ट्रैपनेल्स लाइन, दैट कनेक्ट्स द टू गोनियल एंगल विथ ईच अदर, दैट इज अ ट्रैपनेल लाइन. अगेन, where is occipitomental McGregor Campbell line seen? It is seen in the occipitomental view. Where are trapnel lines seen? Again, it is seen in the occipitomental view. Clear? Next is your SMV or the submentovertex base projection. This is how a submentovertex looks like. You have to basically, मेरा आपको ये पोर्शन दिख रहा, ठीक है. तो ये हमारा किस में यूज होता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो जग हैंडल व्यू बोलते हैं हम, जग हैंडल व्यू, उसमें यूज होता है टू सी द फ्रैक्चर ऑफ द जाइगोमैटिक आर्च, ठीक है. और अगर और देखना है तो मैंडिबल का, बॉडी का फ्रैक्चर. ओके, देन कम्स योर लैटरल oblique projection, lateral oblique projection. ओके, इसके अंदर दो होते हैं, एक होता है आपका बॉडी का, एक होता है आपका रेमस का. बॉडी का चाहिए तो हम नॉर्मल रखते हैं, रेमस का चाहिए तो वी टेल द पेशेंट टू प्रोट्रूड. ओके, सो दिस इज द mandibular body projection in which you can see the whole body of the mandible, and this is the ramus projection in which we tell the patient to bring the jaw forward. Okay, so aapke, just tell me if there is a question in which horizontally unfavorable and favorable fractures, horizontally favorable and unfavorable fractures के लिए which is the best view? OPG is the best view. Okay, not lateral oblique. Okay, next we are going to talk about the TMJ visuals. So TMJ visuals बड़े clear है भाई. I am going to show you the TMJ visuals. Okay, so question आता है, which view has three positions? Which view has three positions like open, closed, relaxed? Open, closed, relaxed. Answer is transcranial view has three positions. तीन positions में हम transcranial view को ले सकते हैं, that is open, closed and relaxed. So this, the first one is the closed one. You can only see the head of the condyle. This is the glenoid fossa. Okay, this is closed. This one is the open one in which you can see this is the articular eminence and glenoid fossa, and ये आपका head of the condyle. Clear? So this is a transcranial view in which you can see the interarticular space clearly. ठीक है? Next आता है आपका transpharyngeal view. So this is a transpharyngeal view in which you are going to see this whole area. Okay, not just this area, the whole area of the condyle and some part of the ramus. That is a transpharyngeal view.
ट्रांसफेरेंजियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पेशेंट को बोलते हैं टू ब्रीद इन, सो दैट जो कॉन्डाइल के पीछे की जो एरियाज हैं वो हमको ब्लैक दिखें ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एयर. नाउ द जिमर प्रोजेक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका जिमर प्रोजेक्शन है. ये आपका एंटीरियर व्यू दिखा रहा है आपके कॉन्डाइल का, द मीडियोलैटरल व्यू ऑफ द कॉन्डाइल. ओके, very important in the fracture of the condylar neck. Okay, next is your reverse Townes view. Again it is condylar neck के लिए रहता है. Okay, this area. This is how the anatomy of your TMJ looks like. This is the lower compartment, this is the upper compartment. Okay, lower compartment is between the condyle and the disc, the upper compartment is between the disc and the glenoid fossa. Okay, let's move to the more advanced imaging. Advanced imaging में हमें कुछ चीज़ें बहुत important है visuals में. Okay, like आपके areas, I'll show you which one. Like the planes. Okay, if you can see the upper portion, ऊपर से अगर आप देखोगे, that is the bird's eye view and the worm's eye view देखोगे, यहाँ नीचे से देखोगे या ऊपर से देखोगे तो that is my axial view. मतलब आपको मेरे दांत ऊपर या नीचे से दिख रहे हैं, that is your axial view. अगर आप मेरा साइड प्रोफाइल देख रहे हो तो that is your sagittal view. अगर आप मेरा फ्रंट जो इतनी देर से आप देख रहे हो वो आपका कोरोनल व्यू है. ये जो एक्सियल, सजाइटल, कोरोनल व्यूज हैं, these are very common in both CBCT, CT. What differentiates a CT and a CBCT is the transaxial view. Basically, इतना सारा डेटा and you just want to see the area of one particular molar. That will be the transaxial section. So we will study only that section because that is of interest for us. Okay, that does not happen in CT, that happens in CBCT. So this is how an axial plane looks like. So you can see here, this is a axial plane. In this you can see the area of maxillary teeth. Okay, so this is how it looks like. This is a axial plane. This is my frontal view. This is a coronal portion. So you can see all this hiatus semilunaris. You can see the maxillary sinus. You can see the orbital structure. Okay. Then this is the sagittal area. This is the sagittal area. And this is the transaxial section. So we have the whole axial area, but we only want to study, say for example, this area. So we will take only this area into consideration. That is a transaxial section.
Clear? This is an image that comes to your exam. क्या है? The first answer will be 3D reconstruction. If they don't give 3D reconstruction, what they will give? Indirect volume rendering. Again, most commonly seen in CBCT. Clear? Again, important visuals. What is this? What is this? This is a surgical template. Very important visual. This is a surgical template. Okay. Say for example, you get this image. Okay, this image. What is this image? What is this green line that you can see? This is known as nerve mapping. So basically with this nerve mapping, we can see how much distance is between the crestal bone and to the superior portion of the nerve. Okay, clear? One more thing that you need to remember in the field of view, that in our dentistry most common is 10 centimeter into 10 centimeter field of view. 10 centimeter into 10 centimeter field of view. We have already discussed this. Now this will be in 3D reconstruction form, or as I said, indirect volume rendering. Okay, so this one is the axial, this one is the coronal, and this one is the sagittal. All clear? Next, I'll talk about few important I will talk about few important cysts and tumors of the jaw जिनके visuals आते हैं. Okay, so the first visual that we are going to talk about is the dentigerous cyst. Okay, dentigerous cyst. This is a central type of dentigerous cyst which starts from the CEJ, ends on the CEJ. Okay, again, this is a, okay, first of all tell me what view is this of CT scan? This is a coronal view, and you can see this. This is a dentigerous cyst. Okay, again, your left eye sees the right side, your right eye sees the left side. So this is left, this is right. Okay, next, how will a odontogenic keratocyst look like? This is how a keratocyst looks like. The borders are scalloped. Okay, the borders are scalloped. It can be unilocular or it can be multilocular.
starts as a unilocular, goes on to become a multilocular. You can see this. Okay, it has become multilocular with the scalloping borders. Clear? This is a hallmark of odontogenic keratosis, and one more hallmark is it does not cross the midline. It does not cross the midline. Okay. This is an important visual. It has come in exam few times. तो बेसिकली आपको ये एक विजुअल दिया हुआ है. क्या लगता है क्या है? What you can see here is bluish tinge of the gum pads. Bluish tinge of the gum pads. तो ये bluish tinge क्या है? ये आपके दांत, जो बच्चे के दांत हैं जो इरप्शन में आ रहे हैं और आपका उसके बीच में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसके कारण ये है. Again, a very important visual is your lateral periodontal cyst. Most commonly occurs in the canine premolar or the premolar area. Starts from the periodontal ligament area here and is between these two areas. This is a आपका lateral periodontal cyst. But this lateral periodontal cyst is most commonly less than 1 centimeter in size. Less than 1 centimeter in size. When it becomes more than 1 centimeter in size, it becomes more than 1 centimeter in size, then it becomes botryoid variety. Okay. Next is ghost cyst or Gorlin cyst. This is how it looks like. So how will you determine that it is a calcifying epithelial odontogenic cyst? आपका मैक्सिला में होगा, एंटीरियर मैक्सिला में होगा, रेडियोल्यूसेंसी होगी और उसके बीच में फ्लेक्स ऑफ कैल्सिफिकेशन होगा, रेडियो ओपेसिटी होगी. दैट इज द हॉलमार्क ऑफ योर घोस्ट सेल सिस्ट or your Gorlin cyst or your calcifying epithelial odontogenic cyst. Clear? Very easy, very commonly asked, and it is very easy to identify. A heart-shaped radiolucency with diverging central incisors is your nasopalatine duct cyst. Is your nasopalatine duct cyst. Okay, it is not a true cyst. नाउ आपको एक विजुअल दिया हुआ है. ये विजुअल है. इन्फेक्टेड टूथ लग रहा है. ओके, सिस्ट है. क्या हो सकता है? दिस इज अ रेडिकुलर सिस्ट और अ पेरियापाइकल सिस्ट. रेडिकुलर सिस्ट और अ पेरियापाइकल सिस्ट.
This is a very commonly asked question. Now you can see here, this whole area looks like a ballooned out area. Okay, this whole area looks like a ballooned out area. Just a second. हेलो पापा, 2 बार घंटी बज गई है. हेलो. देख रहा हूँ. This is a ballooned out area. Okay, so you can see here. Okay, you can see here, this area is known as ballooning expansion. This area is known as ballooning expansion, and it is a hallmark of ABC, that is your aneurysmal bone cyst. Aneurysmal bone cyst. Okay, so this finishes the second part of the visual. I will be back with more parts of the visuals because it is a vast topic. If you have any kind of questions, you can ask me or tag me in the groups. Thank you so much and good night.